वेलकम टू एडटेक पॉडकास्ट लेट्स टॉक। दिस इज योर होस्ट मोहम्मद अफान और आज हम कर रहे हैं ई लर्निंग पे एपिसोड। वी हैव वन ऑफ आवर को-फाउंडर्स फ्रॉम द कंपनी, मिस्टर रोशान। रोशान, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दे कि आप किस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं एंड लिटिल बैकग्राउंड ऑफ योरसेल्फ। जी, Assalamu alaikum, Affan. Thank you so much for having me. I'm Rooshan, co-founder Maqsad. Maqsad is an Edtech platform which is catering to K to 12 segment Pakistan में. So after school academic test based जो है उसमें हम content और technology बनाते हैं बच्चों के लिए ताकि वो पढ़ाई कर सकें अपनी और स्कूल में जो भी वो सीखते हैं उसको supplement कर सकें. Bit about myself. So born and raised in Karachi. अपनी सारी schooling यहाँ की and then after that moved to the UK, worked there for about 7 to 8 years in investment banking and then decided to move back around 2 years ago. राइट, तो मतलब यही सबसे बड़ा सवाल है। यू टोल्ड कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से यूके से वर्क देयर। व्हाई डिड यू प्लान और डिसाइड कि यू हैव अ सक्सेसफुल करियर देयर एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर? आप एडटेक और एजुकेशन के लिए यूके छोड़ के पाकिस्तान आ रहे हैं। जी मतलब उसका कोई कॉल ऑफ फेम नजर नहीं आ रहा। देखिए it just depends on person to person. So always felt like wanted to do something that impacts people in a positive way and was thinking quite deeply. And with my co-founder Taha, we've been together since A levels और यूनिवर्सिटी भी साथ गए, फिर काम भी सिमिलर उसमें कर रहे थे लंदन में. So we always thought कि what can we do that we can bring some positive change in Pakistan. So pandemic हुआ and उसमें हमने देखा कि globally edtech really took off in countries like Indonesia, Brazil, India, where overnight millions of people went online and Pakistan in that regard was struggling. Despite कि हम दुनिया की 5वीं largest population है, इतने हमारे pain points हैं, उसके बावजूद भी हम उस scale पे edtech नहीं हमारा पहुंचा था. So that really got us thinking and then we looked into the space and understood that one of the biggest drivers is कि आपके यहाँ जो smartphone revolution आया है, 4G revolution आया है कि every year कुछ 20 to 30 million more people get access to mobile data and that's really the biggest driver of mobile penetration, internet penetration, and would also be one for edtech. And that got us thinking and decided we want to take this up full time. राइट, मतलब एक तो राइट नाउ आप यूके से पाकिस्तान आए हैं, यहाँ आपसे शायद आपसे लोग मिलते हो बोलते हैं यार हम यूके कैसे जाएं। मतलब ऐसा होता है एक्सपीरियंस में? बिल्कुल नहीं ऐसा होता है, बिल्कुल. आई मीन आई नो कि आजकल देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी economics wise country में, and लोग काफी उस point of view से are looking at things what they can do. I mean the way we look at things is if you take a long term view and you look at Pakistan across the last 20-30 years, obviously you have these cycles when things go well and then things kind of dip down and things go well, and if you kind of wait it out enough cycles, and I think fundamentally if you're doing something that is adding value for enough people, then over time you could build it into like a really substantial business that could deliver value to millions of people. And the biggest thing about Pakistan is we have a very young population. And I think from an opportunity standpoint, if you look at around the world, there are very few countries that have such a young population, because those young population वही लोग हैं जो पहले पढ़ाई करेंगे, फिर वो काम करेंगे, फिर वो economic activity generate करेंगे. So from a long term standpoint, we have a lot of fundamental things going for us. But unfortunately, obviously in the short term, because of uncertainty and macroeconomic challenges, often there's a lot of doom and gloom. राइट, आपने कहा एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, पाकिस्तान में एजुकेशन से बड़ा बिजनेस कोई है नहीं। परहैप्स ये एक डिड यू थिंक अबाउट दैट? मतलब क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में इस तरह के प्रोडक्ट्स, एजुकेशन हो गए या ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हो गए जहाँ लोगों को एस्केप मिल जाता है। बट डिड यू थिंक अबाउट कि एजुकेशन इज अ वे फॉरवर्ड? क्योंकि आमतौर पे जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, मेनी ऑफ दोज हु कम बैक worked on fintech and thought कि fintech is a primary factor जहाँ पाकिस्तान पेमेंट का बहुत प्रॉब्लम है. What do you think about that? Would you consider that? बिल्कुल, देखिए, I think payments would have been a very natural sort of segue. I worked पहले even in banking. The last few years was in more investment banking, but the initial was in actually product management for fintech products. Right. So because I had like a 7-year career, so that would have been a very natural sort of transition. But also felt कि कुछ ऐसा काम करें जो want to challenge myself कि बिल्कुल ही नई चीज करें, like push myself, because obviously you only get older with time. So ऐसी कोई चीज करनी. Secondly, ऐसी चीज करें कि when you look back you look like यार कुछ लोगों का फायदा हो गया, कुछ लोगों के लिए ऐसा काम कर दिया that has been as a positive contribution. I'm not to say fintech doesn't do that, but in our sense was कि let's just try something different and push ourselves out of our comfort zone. Right.
You talked about Maqsad. Let's discuss about Maqsad. How does Maqsad work? मतलब एक यूजर है, अगर मैं हूँ मकसद को, I want to use Maqsad, subscribe to it. मेरी जर्नी कैसे होगी? How do I get to Maqsad? मेरे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं? या देखिए, उसके लिए लेट्स जस्ट टेक अ स्टेप बैक कि लोगों के पेन पॉइंट्स क्या हैं. Right. लोगों के पेन पॉइंट्स आज ये हैं कि वी हैव अ कंट्री वेयर योर एजुकेशन एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यू गेट really impacts your life trajectory. अब इससे क्या मतलब है कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी चले गए तो आपका करियर बहुत ही मुख्तलिफ होगा, आपका लाइफ, आपकी ओवरऑल लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम समवन लेट्स से जो थोड़ी सी कम आपसे यूनिवर्सिटी गया या जो बिल्कुल यूनिवर्सिटी नहीं गया. जो उसमें वो है, क्या बोलते हैं, ताजाद है, बहुत बड़ा है. सही है. सो what that effectively makes is that there is a huge push towards how can we get the best education, because we don't have as a country the resources, don't have the infrastructure to educate all of the people that we are that we have in the country. Like Pakistan is one of the largest student teacher ratios at 45 students to 1 teacher. अगर आप उसको मुकाबला करें तो एक ही मुल्क है रीजन में जो आपसे ज्यादा है, उसमें वो है अफगानिस्तान. So उस तरह अगर आप देखें, so what it effectively makes is that there is a huge amount of population that wants to get the best quality education and will do a lot of things, and the parents and the families will do a lot of things to get it there. And one of the things is that there is a huge demand for after school academic support, right? Because school में unfortunately जो education है वो उस मयार की नहीं दे पा रहे जिसकी होनी चाहिए. सही है. Right. So this is where Maqsad comes in. Maqsad strongly believes that school में it's a very holistic way of learning, and you cannot replace school with anything else, but जो आफ्टर स्कूल आपका वक्त है उसको आप बेस्ट किस तरह यूटिलाइज कर सकें. पेरेंट्स के लिए पेन पॉइंट है कि ट्यूशंस आर वेरी एक्सपेंसिव. दे हैव लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी ऑन कि अगर आपने ट्यूशन बच्चे को भेजा या ट्यूशन टीचर आपके पास आए तो यू डोंट रियली नो मच कि हो क्या रहा है. यू हैव टू, आप वर्ड ऑफ माउथ या फिर आप रिकमेंडेशंस पे ही ऑपरेट करते हैं. एंड इफ यू स्टार्ट एडिंग अप, स्पेशली अगर आप इंटरमीडिएट की आज बात करें, जितनी वो फी पे करते हैं स्कूल की, उससे काफी कई गुना ज्यादा वो पे करते हैं ट्यूशंस की और कोचिंग की. So this is where Maqsad comes in. Maqsad comes in as a solution that makes after school academic support affordable and accessible for millions of Pakistani students. Right. And the journey for that today is कि you download a mobile application and you put in your details कि आप कौन सी क्लास में हैं, कौन से बोर्ड में हैं, और उसके बाद we then curate a learning experience for you where you can ask questions, you can watch lectures both recorded and live, and you can also do tests that give you a view of how is your performance और किन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए. Right. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि all my life I have been to a tuition. मतलब ये मैं स्कूल से I was grade 1 से लेकर I think at least till O levels तक तो I went in A levels of particular sense, and then I think हाँ पूरी जिंदगी मैं तो ट्यूशंस गया हूँ. तो I agree with that कि ट्यूशंस was something. यार मेरी फैमिली में यार लोग बच्चे शाम को खेलने जाते थे, मैं शाम में ट्यूशन जाता था. तो बिल्कुल ऐसा ही है ना, more or less. बिल्कुल ऐसी है. वैसे मैं भी जो बचपन में था तो सुबह स्कूल जाता था, फिर घर आता था, थोड़ा सोता था, फिर वापस ट्यूशन जाता था. और स्पेशली अगर आप ट्यूशन सेंटर भी काफी कुछ जगहों पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो अगर आप दूर रहते हैं तो आपको वापस वहां जाना पड़ता था, फिर आपको वापस आना पड़ता था, तो आपका काफी वक्त तो रोड पे गुजर जाता था. तो आपका घर के वक्त माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ, वो तो बहुत कम होता था. नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. तो आपने ये बात की कि यार आपकी ई लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में, मतलब हाउ डज मकसद, दूसरे भी एडटेक प्लेटफॉर्म्स है, हमने देखा है नून है, हमने देखा है और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स है. हाउ डू यू डिफरेंशिएट योर एक्सपीरियंस कंपेयर टू एनी अदर एडटेक ऐप? देखिए, I think as an edtech, as a sector, firstly we are very happy that there is very nascent sector, so लोग आ रहे हैं, and we welcome more entrants into this space. From how do we add value and how do we think is a USP for us is if you're super localized in the sense कि हम लोग वक्त गुजारते हैं not only at a Pakistan level, because we're only in Pakistan, but at a board level as well. कि आपको पता है कि पाकिस्तान में लोग स्पेसिफिक अपने बोर्ड के हिसाब से चीजें पढ़ना चाहते हैं, एंड इवन दो देयर इज अ ह्यूज ओवरलैप बिटवीन पंजाब बोर्ड एंड सिंध बोर्ड एंड सो ऑन, बट देयर इज अ बिग डिमांड कि हम जो हमारे बोर्ड में उस तरह हम पढ़ना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ क्वेश्चनिंग, द कंटेंट डिलीवरी एक्सेट्रा. सो मकसद इज सुपर focused on localization, number one. Right. Number two, from a technology standpoint, we're very technology first, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं to give a personalized learning experience. What we mean by that is कि देखें, एक खाली लेक्चर देखना या एक चीज़ को सामने रख देना is not enough, especially because the format is very different to how you would be in a classroom. So it has to be telling you something that is tailored to your specific requirements and your learning needs.
So उसके लिए फॉर एग्जांपल वी हैव अ फीचर कॉल्ड डाउट सॉल्व. उसमें यह है कि अगर मेरा कोई सवाल है, मैंने उसकी तस्वीर खींची, तो मेरे पास उसका वीडियो सोल्यूशन इन मोस्ट केसेस 98% ऑफ टाइम एग्जैक्ट वीडियो सोल्यूशन आ जाएगा, बिकॉज वी हैव द लार्जेस्ट वीडियो रिपोजिटरी ऑफ सोल्यूशंस इन क्वेश्चन इन पाकिस्तान. So that is how we differentiate ourselves through a localization and through technology infused personalization. तो क्या दूसरे इस तरह का I won't give you doubt solving. So as of today, there is no other edtech in Pakistan that delivers this sort of a solution. But right, so how do you recognize, मतलब एक तस्वीर से how do you get to a video, मतलब how does the technology work? क्योंकि I became being a software engineer, I just got curious कि how does that work? So obviously there's a lot of work and like multiple teams that go into it, and just to kind of keep it simple and digestible, so we have like a huge repository of videos, which is now the largest repository of any videos in Pakistan. Okay. And we using multiple sort of technologies, we take a picture and we use our matching algorithm to match it with the video solution that we have in our repository. And obviously there's a lot of steps to it because it has to be matched. Like अगर आप match की बात करेंगे उसमें depending on the topic, there are a lot of notations, and how do you parse through the notations, and that is where. I didn't even go to any other subject. I went to maths directly. So yeah, that's what we did. Took a lot of back and forth, took a lot of experimenting, but alhamdulillah, we were able to put this together. That is now adding value to like millions of students across the country for the last 2 years. Right. तो हमने अब डाउट सॉल्विंग की बात कर ही ली है, तो लेट्स टॉक अबाउट दुनिया की सबसे बड़ी डाउट सॉल्विंग ऐप इज चेक, राइट? पीपल यूज चेक अक्रॉस द वर्ल्ड विद द एडवेंट ऑफ एआई. आपने देखा चेक में पीपल हैव स्टॉप यूजिंग चेक नाउ एंड यूजिंग मोर चैट जीपीटी. मतलब हाउ डज दैट हैज दैट अफेक्टेड योर बिजनेस एज वेल? हैव यू सीन दैट? So we haven't directly seen any impact so far. उसकी दो वजूहात हैं. पहली तो ये है कि we not only doubt solve is not the main focus of our business, it's just one of the value that we provide to the consumer, right? The whole thing is we are giving a complete learning solution. A lot of the other companies, they build companies just around one feature, and then that becomes like a big risk if technology progresses. More specifically around AI and ChatGPT, तो जो काफी दूसरे solutions जैसे आपने mention किया check and so on, they were more text based, like they used to give text based solutions, and we are different that we give video based solutions that are in Urdu. तो उससे ये होता है कि वो जो उर्दू में हम देते हैं ना, उससे जो वैल्यू एडिशन है कि ना सिर्फ कि मुझे सवाल का सोल्यूशन मिलेगा, वो तो एक मरहला है, बट आई आल्सो गेट एन एक्सप्लेनेशन कि यार दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट, दिस इज, और वो अपनी जबान में जिस तरह लोग समझना चाहते हैं. सो दैट एड्स अनदर लेयर ऑफ पर्सनलाइजेशन व्हिच टुडे एआई इज नॉट एबल टू डू, स्पेशली इन उर्दू. Right. Having said that, the world is moving super quickly, so we have our eyes on AI and to see okay, how can we be a pioneers in deploying AI technology for Pakistani and Urdu speaking use cases, and hopefully inshallah in the coming days, sorry, in the coming months and years, we'll launch something on that front. Right. So it's quite interesting to be honest, कि something like that. मेरे टाइम पे हम डाउट सॉल्विंग के बारे में सोचते थे, हम टीवी शोज में देखते थे, वहाँ बात करें डाउट सॉल्विंग क्वेश्चन, एंड नाउ it's great to see a Pakistani app doing that. And kudos to you and your team. So moving forward, let's talk about आपके नए प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं. You have launched into multiple programs and multiple boards. पहले मुझे ये पूछना था कि आप लोग कितने boards ऑफर कर रहे हैं, and then new programs that you have in plan with that as well. So yeah, so in terms of our initial focus had been Sindh and Sindh board, उसमें सारे जो corresponding cities आती हैं, Karachi, Hyderabad and so on. But from next month onwards, we also are launching Punjab board. So you have a complete offering for Punjab. And uske baad we'll launch federal board, and then we'll do all of the other provinces as well. So that is class 9 to 12, जो matriculation or intermediate या /FSC के exams देते हैं उनके लिए. उसके अलावा we are also entering into the test prep space. So that is something that we are very very excited about. So test prep काफी बड़ा pain point होता है, because यूनिवर्सिटी में जो दाखिला होता है उसके लिए आपको एक इम्तिहान देना होता है, और उस इम्तिहान की अक्सर जो तैयारी होती है वो काफी महंगी होती है. कि अगर आप alternatives के पास जाएं, so that can range anything from 30,000 to 70,000-80,000 rupees depending on the exam. So now Maqsad, last year we did the MDCAT, and alhamdulillah, we had a very good response where a large number of our students, more than 90% of them, were able to meet the passing mark for qualification into a medical college. So we were very happy that our debut offering did so well. So this year we're not only doing MDCAT, we are doing ECAT for engineering colleges, and we're doing BCAT for LUMS and IBA. Right. That's quite interesting to be honest. मगर मुझे एक चीज पूछनी है, देखना, क्योंकि I during Zoom call में
a lot of students had that complaint कि जब ऑनलाइन हम पढ़ते थे कि यार इफेक्टिवनेस नहीं है लर्निंग, यार फिजिकल क्लास होनी चाहिए कि वी गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली ऑनलाइन में, दूसरी चीजें भी चल रही होती है बैकग्राउंड में। मतलब हाउ डू यू थिंक, मतलब आपके पास यूजर्स है, मतलब हाउ डू यू थिंक हाउ इफेक्टिव इज दैट? देखिए, आई थिंक इट्स अ फेयर पॉइंट। इसमें अब 2-3 लेयर्स हैं। पहली लेयर हम्म। तो ये देखें, जूम फटीग इज ट्रू, ओह। बिकॉज जो जो जूम था कोविड के दौरान, क्योंकि हम्म। दैट्स व्हाट मोस्ट पाकिस्तानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वर यूजिंग, हम्म। उसका यूज केस ये नहीं था पढ़ाई के लिए, वो तो मीटिंग्स के लिए था और हम्म। कॉल्स के लिए था। ठीक है। सो दैट वाज अ वेरी एड हॉक स्टॉप गैप सॉल्यूशन जो हमने रातों रात लोगों ने किया, एंड दैट्स व्हाई द आइडिया ऑफ मकसद आल्सो केम टू अस कि एक पूरा एक लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें हम्म। जिसमें आप वीडियोस देखें। जैसे हमारी वीडियोस मैक्सिमम 10 मिनट्स लॉन्ग, राइट? फिर हम्म। आपने वो देखी, उसके बाद आपने टेस्ट किया, फिर उसके बाद आपने सवाल पूछा। सो इफ यू गो हम्म। थ्रू अ होल जर्नी, so the distraction and the fatigue element हम्म। definitely kind of goes down, because it's not monotonous in that way, and the हम्म। way you learn online is often very different to how you would learn offline, because हम्म। offline आप जगह में बैठे हैं, आपके पास इतनी सारी स्टिमुलेशन है, आपके हम्म। सामने टीचर है, तो वो मुख्तलिफ है, सही है। राइट। So if you go through a complete journey and if you break it down into parts, then people's outcomes and results are much better. Number one. Number two, जो बात है वो ये है कि देखिए, we are giving a service at a very fractional cost to what anybody else would give. And if you look अगर at, आप कॉस्ट कंपैरिजन थोड़ा दे दे तो ताकि लोगों को आइडिया हो जाए। देखिए, अगर आप हमारे उसकी बात करेंगे, जो नॉर्मल 9 to 12 ट्यूशन की बात है, हम्म। तो वी आर गिविंग एट एन एवरेज प्राइस ऑफ अराउंड 1000 रुपीज अ मंथ, जो आप अच्छा। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, जो आप अगर आप बाहर जाएं लेने, हम्म। वो आपको पड़ेगा ये आराम से पर मंथ 4 to 5 thousand, राइट? सो ये तो है। अगर आप टेस्ट प्रेप की बात करें, सो वी हैव एन एवरेज प्राइस ऑफ अराउंड 7 to 10 thousand डिपेंडिंग ऑन द ऑफरिंग, एंड हम्म। एंड वही चीज़ आपको पड़ेगी किसी कोचिंग में 60 to 80 thousand फॉर द सेशन। हम्म। So it's usually like 5 to 10x different depending on the राइट। offering. So coming back to the point, देखें जो आपका पॉइंट है वो हम्म। बिल्कुल एक मुनासिब पॉइंट है, एंड द वे वी लुक एट इट इज कि हम्म। देखें, एवरीबडी ए कैन नॉट अफोर्ड, दे हैव राइट। ट्रांसपोर्ट इश्यूज। आप तो हम कराची के रहने वाले हैं, हमें तो पता है यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। हम्म। अगर खासतौर पे लड़कियों के लिए, अगर उनको कोई ट्यूशन ले जाने के लिए ना हो, तो उनका कोई भाई या कोई उनके वाले, तो अगेन हम्म। वो एक पेन पॉइंट है। तो ये काफी सारे पेन पॉइंट्स हैं जो ट्रू। कॉम्पेंसेट करते हैं फॉर देयर आर अदर चैलेंजेस दैट ट्रेडिशनली यू मे हैव सीन विद हम्म। ऑनलाइन लर्निंग। दैट्स नंबर टू। The third point is कि देखें, as a country we are huge. We have today 100 million people in the age of school going and education. तो राइट। उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे we would want to do it offline, we want to do it online. So we are cognizant of that, and we realize कि for some people online is a better solution, and for others it is offline is a better solution, and we are open minded about that. But if you look at it purely from a value creation standpoint and a pain point, I think online solves problems for the wide majority of the population. राइट। तो हमने बात की ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब व्हाट डू यू थिंक मोर चैलेंजेस दैट मकसद फेसेस राइट नाउ एज अ कंपनी, मतलब व्हाट डू यू फेस एज अ फाउंडर कि यार ये चैलेंजेस है, अगर हम इनको काउंटर कर ले वी कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज ऑफ बिल्डिंग एंड अ होल लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड एक चीज और भी पूछी थी जो आप 1000 रुपए 9 to 12 का पूछ रहे थे, इज दैट वन सब्जेक्ट और ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडेड? All subjects. ठीक है। तो या मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, The challenges? द Yeah, चैलेंजेस? okay. देखिए, चैलेंजेस की जहाँ तक बात है उसमें कि पाकिस्तान इज ए डेवलपिंग इमर्जिंग इकोनॉमी, तो हमारे पास चैलेंजेस तो ऑपरेट करने के बहुत हैं। मैं आपको जरा बताऊँ, सबसे बड़ा तो ह्यूमन रिसोर्स इज अ बिग थिंग, राइट? You have a lot of talent, but in terms of it being developed, it being middle management, it being kind of going through, like, you have a pipeline of talent, especially for edtech, because it's a new it's a new segment, it's a completely new industry. तो उसके लिए we've had to upskill people, we've obviously had to learn ourselves so much, और फिर उसके साथ there's been a huge learning experience for everybody. So that's something like that's a challenge we face every day. Second is around the environment we operate in from a regulatory standpoint. It's an interesting one. अगर आप follow करें जो एमडी कैट है या दूसरे एडमिशन टेस्ट हैं, उनकी डेट्स बढ़ जाती हैं, उनमें कभी कोई चीटिंग का इंजाम लग जाता है तो रीटेस्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। अब जो डेट्स का भी है, देयर इज अ ह्यूज रेंज दैट इट विल, जैसे अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं कि अप्रैल से लेके मई के दौरान होंगे। So so there are a lot of these challenges as a company who wants to plan ahead. It often becomes very tricky. But then there is also an opportunity in that, because अगर आप इन सब unstructured चीजों को लें और इनको structure करें, तो it adds a lot of value. I'll give you an example. In terms of our social media, and in terms of other sort of mediums that we use, the most amount of engagement and posts that get interaction from followers is जब हम basic information उनको एक जगह इकट्ठा करके देते हैं कि भाई आपके एग्जाम इस दिन को है, उसका प्रोसेस ये है और इसके लिए आपको ये करना है।
या मतलब डेफिनेटली हाँ ये एक बहुत ही आप सही कह रहे हैं यार, आमतौर पे ट्यूशन सेंटर्स का भी यही है पे बिल्कुल बेसिक चीज। मार्केटिंग है। अगर आप किसी और किसी और मुल्क में जाएंगे, सो यू कैन जस्ट गो टू अ वेबसाइट और वहाँ सब चीजें होंगी जो आपकी हाँ। रेगुलेटरी बॉडी की होगी, आपकी बोर्ड की होगी, वहाँ हम्म। सब चीजें होंगी। और आपके यहाँ जो है ना, आपको मुख्तलिफ जगहों से ढूंढनी पड़ती हैं और आपको हम्म। इकट्ठी करनी पड़ती हैं, एंड दैट इज ए चैलेंज बट ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी इन इटसेल्फ बिकॉज इट्स सच अ ब्लैक बॉक्स। Right. This is quite interesting on that particular point. So, moving on, हम जैसे हम ग्लोबली आपने देखा है कि चाइना एक अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जहाँ इस तरह का प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, आपने देखा दुनिया भर में है। अब खास तौर पे हमारे नेबर इंडिया में, इंडिया में सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बाइजू इस इट्स इट्स बिन द न्यूज़ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। उनके काफ़ी चैलेंजेस है, फंडिंग के चैलेंजेस है, तो मतलब हाउ डू यू काउंटर दैट? यार आपके पास आप भी एडटेक कंपनी चलाते हैं, मतलब हाउ डू यू काउंटर दैट a company that so large is suffering? Again, I think what happened during the pandemic and in the last few years, especially with low interest rates in the US, is a lot of companies really grew super quickly, and what that also meant was they got themselves into a number of segments and a lot of countries, geographies. So ठीक है। some of the companies and the ecosystem you're mentioning, वहाँ यही challenge लोगों को face हुए कि they grew so quickly and became so large, and then some of them also took on debt instead of equity, and then obviously when the economic environment changes, and it just becomes a very very different sort of True. situation to deal with. So how do we tackle with this? We try to stay grounded, in the sense that we try to do less but try to do it well. We don't try to jump into a number of markets. We've just been focused in Pakistan, for example. From initial days, there was a lot of talk about कि अच्छा आपको you can go into multiple markets, like similarly the other people are coming to Pakistan, but we made a conscious decision कि पाकिस्तान में रहना है. So उन चीज़ों से I think just being a bit conservative on that front and being a bit careful has proven beneficial for us, and that's how we plan on catering to the headwinds of economics globally. But do you think that would Maqsad have that unit economics moving forward in the market that we are facing right now for the next round? They can definitely, the way this edtech model works is once you are able to establish yourself, once you are able to create value and you have enough sort of proof of concept, or like enough people know about it, you have the enough results. Last year हमारे MD CAT का अच्छा batch गुजरा. So we are very confident that if we are able to replicate this at a larger scale, the unit economics are better, because are very positive, because it is at the end of the day a digital product. The cost is getting the word out. The cost is really establishing yourself as a trusted brand. And once that's as the trajectory we're on, if you're able to replicate this, we have no doubt that the unit economics are very Right. good. तो अब कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो एमडी कैट का हो या पी कैट का हो, मतलब व्हाट एडवाइस वुड यू गिव दोज न्यू स्टूडेंट्स हु वांट टू सब्सक्राइब टू मकसद एंड अभी तक ऑनलाइन एक्सपीरियंस नहीं हासिल किया है? देखिए, my advice to all the students जो online learn करें, especially the test prep students, is कि start early. And if Maqsad is offering a lot of things on a freemium basis, whereas you can try them out before you actually purchase anything. So try things out. Reach out to us on WhatsApp. We have counselors who are able to give you guidance without any subscription. Speak to them. I think उससे आपको जो peace of mind मिलेगा before jumping to any conclusion, that would really help you. Give you confidence, but B, also help you plan out the rest of the academic year, because आपके जैसा IBA का test है round 1 lumps का February में होगा, MD CAT is going to be during the summers. So अगर आपने अभी से अपना एक schedule बना दिया roughly, so you will not be scrambling at the end. Right. So towards the end हमारा एक rapid fire round है, anything that comes to your mind with that word, मकसद. Reach potential. ठीक है. E-learning. The future. Startups. Are tough. ठीक है. Startup events. Disrupt. Financial literacy. Very important for Pakistan, especially for women. Right. Thank you Roshan for coming in. And I really love the conversation, and I hope all those who are watching उनको भी पसंद आई होगी, and I hope they can subscribe to Maqsad. Thank you for watching, and meet you in the next episode. Allah Hafiz.